That's my breakfast. That's my luggage. And that's me. All excited to see snowfall. But soon my bubble will burst. Let's see how. Hey guys, welcome back to my channel. I am Vidya. I'm a travel vlogger and right now I'm in Roing. So today I'll be checking out from this resort. And today's plan is to visit Mayudia Pass. After that I'll be going to Tezu. Yesterday I reached here around 5:30 and as you know by 5 or even by 4:30 it gets completely dark. So I was not able to explore this place, but this place is quite pretty. See? Isn't it? And I'm feeling really hot now because I got all dressed up for Mayodia Pass and it's quite sunny out here. ये चाय है ना? चाय, हाँ चाय। यहाँ में खाली ग्रीन टी निकलता है। ये ग्रीन टी वाला है? मतलब ग्रीन टी वाला ना, जो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ ग्रीन टी निकलता है। ये क्या है? ये चाय का फूल होगा। चाय का फूल है? हाँ चाय का फूल है। So these are tea flowers. ये तो महंगा है। ग्रीन टी में बीच वाला निकलता है सिर्फ? हाँ खाली बीच वाला। It's time to grab my luggage and hit the road. Before that, let me show you my cottage from outside. Mayudia is around 62 km from Roing, so we have started now. I'm feeling really hot, so I removed my jacket. We're at the petrol pump. Let's see what's the price now. I feel really lucky that I don't own a car. Roing is the nearest town to Mayodia Pass. Like fire and water, like sugar and salt, like everything and nothing. But when we are apart, I feel like a star, and I miss your sweet, sweet touch. With an elevation of 2,655 meters above sea level, Mayudia is a popular tourist attraction due to the snowfall it receives during winters. There's also a temple near Mayodia Pass. I am at Mayodia Pass and as you can see there is no snow. To experience snowfall you need to come in the month of January, preferably by end of Jan. Right now I'm just enjoying the view. That's it. And there's a small hotel near the pass. I can show you that. Maya Hotel. And there's a toilet as well. Now don't ask me how is it. क्या क्या है खाने में? सिर्फ खाना, मैगी, चाय, खाना मैगी और चाय। खाने में क्या है? मतलब सब्जी है, राइस है, सब्जी और राइस है। चिकन, पोर्क और मटन है। अच्छा।
My lunch, veg thali. Since there was nothing else to do here, I thought I'll resume my journey and try to reach Tezu before sunset. Just got down here to click some pictures. बुरा को मत खींचो, मिथुन को खींचो। आप तो मिथुन के साथ ही है ना? नींबू खा रहा है, वो बुला के खिला रहा है। आपका नमक दे रहे क्या उसको? हाँ, बुलाया है ना। अच्छा। बुला के नमक खाने के लिए आता है ना, दूर दूर से। सामने जा सकता तो कुछ नहीं करेगा। औरों को ये लटक जाता है, कुछ नहीं करेगा? तो कुछ भी नहीं करेगा। लग गया। अरे वो डर गया। नहीं कुछ नहीं करेगा। Mithun is a state animal of Arunachal Pradesh. I hope you guys remember them from my previous vlog. नहीं, वो डर के वहाँ चला गया। एक्चुअली ये जो इन लोगों का कान जो है मैंने वो कुछ ये टिश्यू होता है जो वापस ज्वाइन नहीं होता है। हाँ। इन लोगों का जो तो इसको हम लोग जो अलग अलग मालिक है, अलग अलग ओनर से अलग अलग डिजाइन से काटता है। जैसे आप देख रहा होगा एक तो ऊपर से ऐसे जस्ट ये काट दिया मैंने। अच्छा, कान काट देता है? हाँ, कान काट देता है। तो जो अच्छा। टेंडन कुछ है मैंने तो वापस ज्वाइन नहीं होता है। तो आप देखिए ये वाला इसका पास में जा करके देखिए तो ये ऊपर से ये क्लिप करके किया होगा। तो हर ये डिफरेंट ओनर का डिफरेंट ये स्टाइल्स होगा मैंने। अच्छा, जैसे कान काटा है उस हिसाब से ओनर कौन है? हाँ, उस हिसाब से पता चल जाएगा ओनर कौन है बोल करके। अच्छा, तो आप मेरा ये क्या बोलते हैं, जैसे हम भी ऐसे छोटा मोटा ब्लॉगिंग करते हैं, ऐसे नॉट वेरी सीरियस वन। तो आप जो रूरल वीकेंड्स को देख सकता है मैंने। रूरल वीकेंड? हाँ, रूरल वीकेंड्स बोल साइड में। I just wanted to pet him, but seems like he's scared of me. Well, I'm lucky that his mom didn't hit me with her horns. मुझे सींग मार देगा फिर। We headed towards Tezu, which is around 120 kilometers from Mayudia Pass. Tezu, and it took me 3.5 hours from Mayudia Pass to reach Tezu. It's 5:30 now. Today I was a little disappointed. I was expecting snowfall at Mayudia Pass, but maybe I should have come in the month of January. But anyways, the view was good. I enjoyed that. So yeah, I'm ending my vlog here. If you like my content, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Do let me know what you think about my vlog in the comment section. I'll see you guys in the next episode. Till then, peace.